Good evening, everyone. So, today we are going to discuss the week 4 assignment solution of artificial intelligence, knowledge representation, and reasoning. And, guys, let me tell you that an introduction to artificial intelligence, that paper, the detailed solution will be out soon, very soon. Very soon means from today or tomorrow, we will be uploading the detailed solution of an introduction to artificial intelligence. But before that, let me complete a few weeks, like week 4, week 5, week 6 till week 7. Let me complete it, then we will be busy with the an introduction to artificial intelligence, and we'll be solving all the questions. Do not worry about it. So today we're going to discuss week 4, and this topic consists of first order logic, FOL, first order logic. We'll be discussing this topic, and this is a very interesting topic. Let me tell you. Let me take out my glasses first. Please wait for a second. So few formulas are there that we should discuss, and we should know, like alpha implies beta, and alpha is true, then beta is true. Then this is known as modus ponens. Alpha implies beta, and beta is false. Then alpha is true. Alpha is also false. We have already discussed earlier. The alpha is also false. This is known as modus tollens. Okay. Now, what is universal affirmation? We should know these definitions first before going through the assignment. Universal affirmation. Universal affirmation. All S are P. This is universal affirmation. Particular affirmation. Some S are P. Then universal denial. No S is P. Then particular denial. Some S are not P. From here only we came. Some S are not P. Let me take one more sheet. Hope इतना तो clear है. अब first order logic is also known as predicate calculus. Why? Because we use predicates. Okay, because we use predicates, तो उसको predicate calculus भी बोलते हैं. Now, first order logic is defined over a domain. Okay, is defined over a domain. डोमेन मतलब एक एरिया है, उसी एरिया में वो डिफाइन किया रहेगा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. ओके, अब नाउ ये प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज यूनरी प्रेडिकेट. एग्जाम्पल ले लो. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. टॉल ब्रैकेट में एक्स, दैट मीन्स एक्स इज टॉल. सिंपल. One is binary predicate. इसमें लिखो father x comma y, which means x is father of y. Simple. होप इतना क्लियर है. अब लेट मी टेल यू वन थिंग. इसकी मीनिंग है फॉर ऑल.
for all. Okay, and this means there exists. इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर. Okay, and or not, these are all connective operators. क्या बोलते हैं? connective operators, connectives or operators. Now we are going to discuss about LPFC. L is for first order logic and P comma F comma C, or LRFC. RFC. R is relation. Okay. Now P is the P क्या होता है? P is set of predicate symbols. Set of predicate symbols. Denoted by uppercase letter. Uppercase letter. I mean, first letter should be uppercase. First letter. Okay. Example. Let us take some examples. Example. Let me take. जैसे greater than. See, the first letter is capital. Man. First letter is uppercase. Mortal. First letter is uppercase. This is the thing. Is predicate. F is function. F is set of function symbols. Function symbols denoted by lowercase letter. Example, let us take successor. All are smaller. Okay, then sum. This is a function. Okay, and then once let me take one more paper or sheet, you can say. Function to ho gaya. Now we are going to come over constant. Set of constant symbols. कैसे? C equal to C1, C2, C3. Example ले लो. Let me take an example. It's the issue of the iPad. Let me grab this thing. Hang हो जाता है बीच में iPad. iPad is also not that. Now it is working. Example ले लो. Let us take an example. Okay. Let us take an example. जैसे tall bracket में Raju. So this one is a constant. This is a constant. It can be capital or small, it doesn't matter. This is a constant. Okay. उसके बाद opposite T and capital, these are all formulas. These are also formulas. We'll discuss later on these things.
Just keep in mind. Now let me write one more important thing. A domain D, a domain D, a domain D, or the universe of discourse. UOD भी बोलते हैं कभी कभी कोई बुक्स में, ठीक है. यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स is the world of FOL. First order logic. Now atomic formula in first order logic. Now we are going with few formula terms that we are going to use in the exercise or assignments, you can say. Atomic formula. In first order logic. इसमें क्या होता है? It cannot have logical connectives. ये सब टर्म्स याद रखना. लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है? जैसे दिस वन and or then this symbol, then you can use this symbol also. Okay, if and only if, ठीक है. तो if then these symbols cannot be used in atomic formula. It can be well formed formula without logical connectives. Atomic formula is the smallest unit that has truth values. That has truth values. Okay. Now term. एटॉमिक फार्मूला तो समझ आ गया. अब टर्म के बारे में बात करेंगे. टर्म इन लॉजिक PFC. जैसे T1 is a term. T1 is a term. T belongs to V, variable. V means variable. So this is a term. Okay. T belongs to constant. This is also a term. T belongs to a constant. See, this is also a constant. This one is constant. These are all terms. ये सबको terms बोलते हैं. Function of T1, T2, Tn. So this is also defined as a term. Keep in mind. Okay. If T1, T2 are terms, then T1 equal to T2 is an atomic formula. Okay. T1 equal to T2 is an atomic formula. Now P is a predicate. Okay. P of T1 terms को यदि मैं कर दे T1, T2 Tn, तो इसको क्या बोलते हैं? This is also a atomic formula. बस इसको रीड करना, समझना है, and you have to write it. Okay. This one P is the predicate. Keep in mind. If alpha is an atomic formula, alpha is an atomic formula, then alpha belongs to a function. Okay. If alpha is a formula, could be a formula, then not alpha is also a formula. Okay. If alpha comma beta is a formula F, you can say function. Okay. Then alpha and beta
is also a formula. If alpha comma beta is a formula, then alpha or beta is also a formula. If alpha comma beta is a formula, then alpha implies beta is also a formula. Now what is a sentence? Let me take one more sheet. Sentence. Sentence क्या होता है? A formula without free variables is a sentence. Now we can go to the exercise, okay, and solve the questions one by one. Let us see. Which of the following are well-formed formulas? Well-formed formula. Which of the following are well-formed formula? So what is there? Celebrity ADA, ADA and ये नॉट सिंबल लगाया हुआ है. कितने नॉट है? 1 2 3 4. सिंपल 1 2 3 4. 2 का मीनिंग कुछ नहीं है. इस मीनिंग इज नथिंग. नॉट ऑफ ए क्या होता है? नॉट ऑफ ए क्या? नॉट ऑफ ए उसका ऑपोजिट करोगे तो फिर ए ही हो जाएगा. ऐसे करके ये दोनों का भी कोई मीनिंग नहीं है. उसका मतलब क्या है? सेलिब्रिटी एडा एंड सेलिब्रिटी एडा, ये क्या है? एक लॉजिकल कनेक्टिव किया हुआ एंड तो दिस इज द वेल फॉर्म फॉर्मूला. सिंपल. ओके. Okay, then works with ADA X. Works with ADA X. Works with ADA X. You can see this X is a free variable. X is free variable. But in well form formula, लिख देता हूँ. In well form formula, free variable is allowed. फ्री वेरिएबल इज अलाउड. तो ये भी हो गया. ये फॉर ऑल एक्स वर्क्स विथ एडा एक्स, मैंने एडा वर्क्स विथ एवरीवन. ओके, तो ये भी ट्रू है. इज फाइन. अब ये देखो फोर्थ वाले. फॉर ऑल एक्स वर्क्स विथ एडा इम्प्लाइज का नॉट. ये तो इनवैलिड सिंटैक्स है ना. इनवैलिड सिंटैक्स. दिस इज इनवैलिड सिंटैक्स. तो ये तो हो नहीं सकता. देयरफॉर दिस इज नॉट करेक्ट. ओके. नाउ वर्क्स विथ एक्स कॉमा वाई, माने सम एक्स वर्क्स विथ वाई. ओके. एक्स मतलब ये क्या है? दिस वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो समवन वर्क्स विथ वाई. ओके. तो दिस इज ऑल्सो वेल फॉर्म फार्मूला. तो ये चारों हो गए. 1 2 3 4. होप आप लोग को समझ में आ गया व्हाट इज वेल फॉर्म फार्मूला. नाउ व्हिच आर द फॉलोइंग आर सेंटेंसेस इन दिस. सेंटेंसेस पहले मैंने एक वर्ड बोला है विदाउट फ्री वेरिएबल. फ्री वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड इन सेंटेंस. अब देखते हैं. अब देखो सेलिब्रिटी एडा एंड डायरेक्ट सेलिब्रिटी एडा, ये इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है. मीनिंगलेस है. ठीक है. उसका मतलब दिस इज करेक्ट. ना वर्क्स विथ एडा वर्क्स विथ एक्स. तो एक्स क्या है? एक्स इज ए फ्री वेरिएबल. दिस इज नॉट अलाउड. दिस इज करेक्ट. नाउ एक्स वर्क्स विथ ऑर्डर. ये तो ये सिंबल रॉन्ग. सिंबल ऐसे सिंबल तो हो ही नहीं सकता. तो ये क्या है? सिंटैक्स एरर. तो ये पॉसिबल नहीं है. सिंटैक्स एरर ऐसे भी इन लोग एग्जाम में दे देते हैं सिंटैक्स एरर करके. देयर समवन दैट वर्क्स विथ दिस. ओके. व्हिच आर द फॉलोइंग आर सेंटेंसेस. देयर इज सम एक्स विथ वर्क्स विथ वाई. तो जो वाई है, वाई क्या है? ये फ्री वेरिएबल है. तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो क्या हुआ? दोनों ही हुआ. ये सेलिब्रिटी एडा और एंड एडा वर्क्स विथ एक्स, ये दो ही हो सकते हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल. अंडरस्टूड. सो दिस इज द थिंग. अब आप लोग क्लियर हो गए. थर्ड इज व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन एटॉमिक फार्मूला. एटॉमिक फार्मूला क्या है? लेट अस गो एंड सी. एटॉमिक फार्मूला ये तो यहाँ पे मैंने थ्योरी इसके लिखे हैं. cannot have logical connectives. Connectives नहीं हो सकता. will for formula smallest unit, that is true value. Cannot have logical connectives. Okay.
कैन नॉट हैव लॉजिकल कनेक्टिव्स, इसमें लॉजिकल कनेक्टिव है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस पे भी लॉजिकल कनेक्टिव है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद देखते हैं किसमें लॉजिकल कनेक्टिव है, दिस वन लॉजिकल कनेक्टिव। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, ये तो क्लियर दिमाग में डाल लो, ओके। अब क्या है, दिस वन इज फंक्शन, दिस वन इज ए सेलिब्रिटी, सी कैपिटल है, तो क्या हुआ, फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन के बाहर क्या है, मीन्स प्रेडिकेट विथ फंक्शन, predicate with function. Predicate with function means what would happen? Predicate with function. Predicate with function means it is term. It is a term. So this is true. X friend of Ada. यहाँ पे तो फ्री वेरिएबल वगैरह का कोई बात ही नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ओके। मदर एडा इक्वल टू मदर बेन, दिस इज ऑल्सो ट्रू, अंडरस्टूड। मदर एडा इक्वल टू मदर बेन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो टर्म, ओके, दिस इज ऑल्सो टर्म। फंक्शन के अंदर यदि कांस्टेंट हो, फंक्शन के अंदर कांस्टेंट होने से दैट इज नोन एज टर्म। फंक्शन के अंदर यदि कांस्टेंट हो दैट इज डिफाइंड एज अ टर्म, एंड टर्म इक्वल टू, ये टर्म वन है, ये टर्म टू है, तो इक्वल टू हो सकता है, टर्म वन इक्वल टू टर्म टू, मैंने कहीं लिखा होगा टर्म वन इक्वल टू टर्म टू, यहाँ पे ओवर हियर, कैन यू सी। तो इट इज एन एटॉमिक फार्मूला, इफ T1 इक्वल टू T2 देन इट इज एटॉमिक फार्मूला, तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो दिस इज एन एटॉमिक फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस वन इज ऑल्सो फार्मूला, फार्मूला के अंदर फार्मूला नॉट पॉसिबल, फार्मूला विद इन फार्मूला इज इनवैलिड, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। फार्मूला विद इन फार्मूला के अंदर फार्मूला नहीं चल सकते, अंडरस्टूड। दिस इज ऑल्सो लॉजिकल कनेक्टिव, डजंट वर्क। तो हमारे क्या वर्क कर रहा है, सेलिब्रिटी फादर एडा, ये वर्क कर रहा है, फ्रेंड ऑफ एक्स एडा, मदर फादर, ये तीनों वर्क कर रहे हैं। होप आप लोग को क्लियर हो गया एटॉमिक फार्मूला क्या है। नाउ दिस वन, select the formulas that are equivalent to the boolean function g of ab, can you see this g of ab, इसमें सिर्फ will be concerned about the truth things, truth, ये एक true है और एक ये true है, we will be concerning with these two things only, nothing else, we are not bothered about anything else, false से कोई मतलब नहीं है मुझे, keep in mind। तो आप देखते क्या है, a and not b, a this one is a equal to true and not b करने से क्या होगा, true और और ए एंड नॉट बी कर लो, ये एक ट्रू, और क्या हो सकता है, नॉट ए और बी, नॉट ए एंड बी, नॉट ए में क्या है, फॉल्स था, इसको ट्रू कर दो, एंड बी तो ट्रू है ही, तो ये दोनों यदि इवेल्युएट करें, ये दोनों स्टेटमेंट साथ में, दिस वन दैट वी हैव इवेल्युएटेड हियर, तो क्या होगा, इट विल इवेल्युएट टू ट्रू, ओके। नाउ ए और बी, ट्रू और फॉल्स, ये क्या होगा, ट्रू और फॉल्स में क्या होगा, ट्रू, ए और बी से ट्रू, एंड इससे तो ट्रू हो गया है, एंड एक और क्या सकता है, यदि इसको नॉट ए कर दो, नॉट ए और बी, ये ट्रू और फॉल्स में ट्रू होगा, फॉल्स एंड ट्रू में ट्रू, ये तो ट्री है, ठीक है, ट्रू फॉल्स में ट्रू, फॉल्स ट्रू में ट्रू, ये तो ठीक है, ट्रू एंड। अब ए एंड नॉट भी कर सकता हूँ, या नॉट, हम ए भी कर सकते हैं ना, नॉट ए और नॉट बी, देखो नॉट ए और नॉट बी, क्यों, नॉट ए सपोज ये फॉल्स हो गया, नॉट ए ये वाला फॉल्स हो गया, लेकिन ये वाला तो ट्रू हो गया, ट्रू और फॉल्स में क्या हो गया, ये भी ट्रू होगा, ये सिमिलरली यहाँ पे नॉट ए मतलब क्या हो गया, ट्रू, ये वाला फॉल्स हो गया, तो इसमें भी ट्रू हो गया, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस ऑल्सो इक्वल्स टू ट्रू, एंड बी इक्वल टू नॉट ए, ये ए इक्वल टू नॉट भी हो सकता है, बी इक्वल टू नॉट ए यदि करेंगे दैट विल ऑल्सो इवैल्यूएट टू ट्रू, बी not a, b equal to not a, that will also evaluate to true, how, जैसे ये है,
दिस वन बी इक्वल टू, हाँ एक बी इक्वल टू नॉट है, बी इक्वल टू नॉट है मतलब क्या, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी, दिस थिंग्स आर इवैल्यूएटिंग टू ट्रू ना। बी इक्वल टू नॉट है, बी का वैल्यू जो भी होगा उसका ऑपोजिट ए का वैल्यू होगा, बी का वैल्यू जो भी होगा उसका ऑपोजिट ए है। देखो ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, एंड इवैल्यूएटेड टू ट्रू, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो द ऑप्शन। होप आप लोग को क्लियर हो गया। Now, according to the first order logic semantics, which of the following are models of the sentence? अब what is a model? Okay, what is a model? That we should know. What is a model? तो पहले कुछ डेफिनेशन होगा मॉडल की, उसके पहले मैं कुछ थ्योरी लिखूंगा। लेट मी राइट इट हियर ओनली, और चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। ए इम्प्लाइज बी, ब्लैक में लिखता हूँ, दैट विल बेटर आई थिंक। ए इम्प्लाइज बी, यहाँ पर क्या है, ए क्या है, ए कॉन्सिक्वेंट है, एंटीसीडेंट, सॉरी एंटीसीडेंट, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ओके, ए को एंटीसीडेंट, बी को कॉन्सिक्वेंट। नाउ लेट मी राइट द थ्योरी, ये दिमाग में रखो आप। ए को एंटीसीडेंट बोलते हैं, बी को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ए मॉडल ऑफ ए सेंटेंस a model of a sentence is an interpretation, is an interpretation that makes the sentence, that makes the sentence true, that makes the sentence true। क्या है ये, दिस वन इज द सेंटेंस, दिस वन इज द सेंटेंस। ओके, दीज आर ऑल मॉडल्स। अब कौन सा मॉडल इस सेंटेंस को ट्रू करेगा, दैट वी हैव टू, दीज आर नोन एज द मॉडल्स, दीज आर द मॉडल्स। अब इसमें कौन सा मॉडल हम ये मेरे सेंटेंस को ट्रू करे, दैट वी हैव टू डिसाइड, दैट वी हैव टू सी। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू शुड नो, universal quantification is always satisfied, is always satisfied by the empty antecedent, by the empty antecedent and not by empty consequent। empty antecedent चल जाएगा, empty consequent नहीं चलेंगे, सिंपल, ठीक है। और ये यूनिवर्सल क्या है, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में भी यूज होंगे। दिस इज सेम, सॉरी वन सेकेंड, दिस इज सेम for existential quantifier, this is same for existential quantifier। तो क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक सिमेंटिक्स, तो यहाँ पे क्या क्या है देखो। फर्स्ट मॉडल ये है, वर्क्स विथ एडा बेन एडा एमा। यहाँ पे क्या लिया, पहले ये वाला पढ़ते हैं, ऑल एक्स ऑल वाई। ओके, एक्स वर्क्स, इफ एक्स वर्क्स विथ वाई देन x is a friend of y, simple, and vice versa, सब होंगे। vice versa मतलब क्या हो गया, all x all y, उसका मतलब x is a friend of y तो y is also a friend of x, ये तो दिमाग में रखो। now works with एडा बेन एडा एमा, बेन डॉन जो भी है, works with है, ठीक है। एडा वर्क्स विथ बेन, एडा वर्क्स विथ एमा, बेन वर्क्स विथ डॉन, फाइन। फ्रेंड ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, फ्रेंड ऑफ यहाँ पे खाली है, देयर इज नथिंग, ब्लैंक। तो क्या बोला यहाँ पे, एम्प्टी एंटीसीडेंट बट नॉट बाई एम्प्टी कॉन्सिक्वेंट। यहाँ पे एम्प्टी एंटीसीडेंट है तो दिस इज फॉल्स, उसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। क्लियर, ये दिमाग में रखो, दिस कैन नॉट बी देयर।
Okay. Now ये वाला works with Ada, Ben, Ben, Don. Ada works with Ben, Ben works with Don. Now friend of क्या कर दिया, यहाँ पे क्या बोला, X works with Y. If X works with Y, then X is a friend of Y. X is a friend of Y. यहाँ पे क्या किया, Ada is a friend of Ben. दो फ्रेंड ऑफ में क्या है, बेन कॉमा एडा, उल्टा हो गया ना, वाई एक्स हो गया, ये एक्स वाई है तो ये वाई एक्स हो गया, तो यहाँ पे एक्स वाई यदि है तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई एक्स, तो दिस कैन नॉट बी द थिंग, अंडरस्टूड. नाउ वर्क्स विथ एडा बेन, यहाँ पे देखो फ्रेंड ऑफ एडा बेन है, वर्क्स विथ एडा बेन, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी वी आर नॉट कंसर्न, लेकिन इससे मेरा मेरा ट्रू तो हो गया ना, दिस सेंटेंस इट बिकम ट्रू, तो दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट. नाउ वर्क्स विथ फ्रेंड ऑफ एडा बेन, एडा एमा बेन डॉन, फ्रेंड ऑफ जो भी है, वर्क्स विथ क्या किया मैंने बोला, इट कैन बी एम्प्टी, आई हैव टोल्ड यू इट कैन बी एम्प्टी एंड इट इज एम्प्टी, तो क्या, दिस इज ऑल्सो द मॉडल. होप आप लोग को क्लियर हो गया. दिस विल कम मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस विल कम इन द एग्जामिनेशन, आई एम टेलिंग यू. तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस. Next question. According to first order logic semantics, which of the following are models of the sentence? There exists X, all Y. Works with X, works with Y, friend of X comma Y. But before that, let me tell you that for full solutions, you have to take, for full solutions, you have to take the membership. Till then, means whatever I have taught you, this is for week 4, but it's not complete. For completion, you have to do question number 6, 7, 8, 9, 10, and more theory will be covered. So at least you can see that what I'm teaching in the detailed solution. That's why I'm giving this for free. And after from question 6, from question 6, it will be paid version. Thank you.